Okay. So now we'll discuss the next topic, that is simultaneous decay modes of a radioactive element. Suppose that we have a radioactive element here, let us say X, and X is decaying into two simultaneously. Sometimes it is decaying to give Y, sometimes Z. Okay. So then this situation is called as simultaneous decay, right? But generally we have seen that X will give Y, Y will give Z, like that. But here we are talking about simultaneous decay. That means X may give Y or X may give Z. Now X may give Y, उसका जो decay constant है, let us say it's lambda 1, and X may give Z, उसका जो decay constant है, let's say it's lambda 2. Okay, so lambda 1, lambda 2. Now, whenever whenever a radioactive element, whenever a radioactive element has probability probability of more than one decay, have probability of more than one decay. That means X can give Y or X may give Z. So when this probability is there of more than one decay, then it's effective. Then its effective decay constant is given by decay constant is given by lambda effective is equal to lambda 1 plus lambda 2. It's given by lambda effective is equal to lambda 1 plus lambda 2, because there are two possibilities, right? So there are two decay that is going on simultaneously, X into Y and X into Z. So effective decay constant will become sum of lambda 1 and lambda 2. Okay. Now if the probabilities of disintegration, let us say, if the probabilities of the disintegration, if the probabilities of the disintegration of X to Y is P1, okay, P1, and X to Z is P2, then what? Then we can say that, then we can say that what is lambda 1? Lambda 1 will be probability P1 into lambda effective. And what about lambda 2? Lambda 2 will be probability 2 into lambda effective. So let us say this is equation 1, this is equation 2. Another thing, now X is converting into Y and Z. Let us say if T is the half-life of X, T is the half-life of X, then what will be lambda effective? Because ये जो lambda 1 और lambda 2 है, दोनों को मिला के क्या है? Lambda effective. तो lambda effective क्या हो जाएगा? तो आपको पता है T half क्या होता है? T half होता है ln2 by यानी 0.693 by lambda. तो lambda effective इधर आएगा. तो यहाँ से lambda effective कितना आएगा? Lambda effective यहाँ से आ जाएगा ln2 by T. ठीक है? तो आप यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड we'll find a relation between lambda 1, lambda 2 and lambda effective. Okay, so please do this, all of you. So Yes, sir. if we consider the initial at t equal to 0, the total number of the nucleus जो है x के जो है undecayed nuclei of x, उसको हमने m0 मान लिया.
तो फिर टी टाइम पे क्या होगा, टी टाइम पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा ई नॉट एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा इफेक्टिव टी, यस और नो, क्योंकि क्योंकि x इज डिकेइंग इनटू y एंड z, यस और नो, ये हो जाएगा माइनस ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। Now x is converting into y, so what will be the rate of production of y? So rate of production of y will be lambda 1 into n. So rate of production of y will be how much? That rate will be lambda 1 into n, and n का value है हमारे पास यहाँ पे. Similarly, x is converting into z. So what will be the rate of production of z? So rate of production of z will be, it's very simple, that will be lambda 2 into n. So please note down till this point. So chalo, now we'll discuss the last topic, that is called as the accumulation of a radioactive element. Accumulation of a radioactive element in a radioactive series. So this is the last topic which we are going to discuss. Okay. Okay, चलो let us start. तो देखो, जैसे मैंने बताया था आपको कि A1 है, A1 से A2 बन रहा है और A2 से A3 बन रहा है, ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोडक्शन रेट ऑफ A1 A2, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो द प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 क्या है? प्रोडक्शन रेट ऑफ A2 इज इक्वल टू डीके रेट ऑफ A1 इज इक्वल टू डीके रेट ऑफ A1. मतलब जो प्रोडक्शन रेट है दैट इज लैम्डा 1 n1. यस और नो? यस सर. और दूसरा है डीके रेट. नाउ डीके रेट क्या है? मतलब इसका नंबर हमने n1 लिया है, ये डीके लिया है लैम्डा 1. A2 का नंबर एट एनी टाइम इज n2, डीके इज लैम्डा 2. तो व्हाट इज डीके रेट ऑफ A2? लैम्डा 2 n2. ठीक है. तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं ये देखूंगा कि व्हाट इज द नेट प्रोडक्शन ऑफ A2, व्हाट इज द नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ A2, अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा? तो जो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा A2 का, वो होगा कि वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है और किस रेट से डीके हो रहा है, उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है वो लैम्डा 1 n1, उसमें से मुझे लैम्डा 2 n2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? What is this? This is the net rate of production. Net rate of production of A2. तो नेट रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? जिस रेट से वो प्रोड्यूस हो रहा है माइनस जिस रेट से वो डीके हो रहा है, उन दोनों को जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नेट रेट मिल जाएगा. इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन. ठीक है. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन इन dt टाइम dn2 in dt time dn2 nucleus of A2 are accumulated. ठीक है. तो dn2 का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से? वो आएगा लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2 इंटू dt. बोलिए, आप लोग यहाँ तक समझ में आया सबको? यस हाँ सर. सर. हाँ सर. हाँ, सो इट्स वेरी सिंपल. अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे तैयार करना है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग इस तरह से करेंगे. यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो लैम्डा 2 n2, इस लैम्डा 2 n2 को हम लोग इस साइड ले आएंगे. विल ब्रिंग इट दिस साइड. ठीक है.
तो ये हो जाएगा अपना dn2/dt प्लस λ2n2 इज इक्वल टू λ1n1। ठीक है, ओके। अब n1 का वैल्यू तो पता है आपको, n1 का वैल्यू कितना है, n1 मतलब जो इनिशियल, राइट, इसके जो नंबर बचे हैं, तो इसका नंबर तो इनिशियल जो n नॉट है उस पर डिपेंडेंट है, तो वो हो जाएगा n नॉट इंटू ई रेज टू माइनस लैम्डा वन टी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा dn2/dt प्लस λ2n2 इज इक्वल टू λ1n1 की जगह n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा वन टी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का हो गया है, ये इस फॉर्म का हो गया है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना आता है, यस आता है कि नहीं आता है, आता है। आता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से आपको मिल जाएगा n2 का इक्वेशन। ठीक है, तो वो मैं लिख दूंगा, आप पहले इसको यहां तक लिख लीजिए। So on solving this we'll get n2 is equal to lambda 1 n naught divided by lambda 1 minus lambda 2 e raised to minus lambda 2t minus e raised to minus lambda 1t. Did you get this answer? So this is n2. So this is accumulation of n2. This is the rate of, this is the equation of n2 you can say. So this is the accumulation of n2. Okay, you have got n2 as a function of time. This is what we wanted to get. I hope all of you have understood. So with this we have end this chapter. Okay, in the next lecture we'll take some examples based on all this. All right. Okay, till then, bye everyone.